children. So today we are going to study about vertical circular motion. So in vertical circular motion, this is such a topic, right, in which many things are being covered. Concept of work or energy, that is conservation of energy. Then circular motion is there, centrifugal force is there, right? Conservative and non-conservative force concept is there. Then work power energy, in which condition there will be work by a force. And it is combination of everything. It is very important bit of laws of motion or a part of circular motion also. So we will talk about vertical circular motion. Suppose this is the string and एक बॉब यहाँ पर पॉइंट मास अटैच्ड है और इसको हम एक सर्कुलर पाथ में ऐसे घुमा रहे अबाउट दिस पॉइंट. अब इसको लेकर के इस में ऐसे घुमा सकते हैं, राइट? इट इज अटैच्ड विद द स्ट्रिंग, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में ऐसा मोशन दे दिया. इस केस में अपने को फाइंड आउट करना है कि अंडर व्हाट कंडीशन दिस बॉब विल मेक द कंप्लीट सर्कल. What should be the minimum velocity given to this? अगर हमने इसको एक वेलोसिटी दे दिया u, तो क्या होगा? It depends on the magnitude of this velocity, कि ये यहां तक जाता है, यहां तक जाता है, यहां तक जाता है, या फिर इसको सर्कल कंप्लीट करता है. It depends क्या मैग्नीट्यूड इसका है, ठीक है. तो पहले हम काम करते हैं कि जनरल कंडीशन एज्यूम करते हैं, ठीक है. सपोज इसको एक सर्टेन वेलोसिटी u दिया गया एंड इट हैज कम ओवर हियर, ठीक है. अब इसकी इस जगह पर वेलोसिटी जीरो नहीं है, कोई कुछ वेलोसिटी है, तो वी विल सी अंडर व्हाट कंडीशन व्हाट इज द सिचुएशन ओवर हियर. यहां वेलोसिटी u दिया, यहां पर वेलोसिटी टेंजेंशियली रहेगा. सपोज दिस वेलोसिटी इज v, राइट, एंड इट हैज बीन शिफ्टेड बाय एन एंगल थीटा. अब और ये सिचुएशन ये मान लेते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली यहां पर हम सिचुएशन v मान लेते हैं एंड एक पॉइंट वर्टिकली यहां लेते हैं, पॉइंट को c मान लेते हैं. हमारा ये जो बॉब है, बॉब इज ऑफ मास m, ये यहां पर आ गया, इतनी वेलोसिटी दी गई कि भाई यहां पर आते आते इसकी वेलोसिटी v हो गई है. जनरल कंडीशन भी कंसीडर कर लिया. अब इस सिचुएशन में देखेंगे कि किस तरह से हमारा एक इक्वेशन फॉर्म होता है. हमको ये वेलोसिटी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ दिस इनिशियल वेलोसिटी, द एंगल थीटा, और सपोज इस सर्कुलर पाथ का लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज r. यहां से यहां तक स्ट्रिंग है, इसका लेंथ r है. अब इस सिचुएशन में हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, देखें क्या क्या रिलेशन मिलता है. वेलोसिटी हमको नोन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, इट हैज मूव्ड बाय एंगल थीटा. जैसे थीटा वेरी करेगा है, वेलोसिटी चेंज होते जाएगा, ठीक है. दिस इज फिक्स्ड. सो हम इस सिचुएशन में हम एक जनरल रिलेशन बना करके देखेंगे. नाउ यू सी व्हेन इट हैज रीच्ड टू हियर, तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. एक टेंशन T एक्ट कर रहा है, और इट इज लाइक ए कंस्ट्रेन्ड मोशन. यू सी इससे बंधा हुआ है. ये अगर टेंशन में है तो ये इसी रेडियस के सर्कल में जाएगा. तो सर्कुलर मोशन वी कैन एज्यूम दैट इज ए कंस्ट्रेन्ड मोशन ऑल्सो. तो जब तक इसमें टेंशन है तब तक ये सर्कुलर पाथ में रहेगा. टेंशन खत्म हो गया सपोज किसी सिचुएशन में, तो सर्कल में नहीं रहेगा, क्योंकि एज लॉन्ग एज स्ट्रेस्ड तब तक तो सर्कल में रहेगा ना. अगर टेंशन नहीं इसके अंदर है तो सर्कल छोड़ देगा. नाउ
इस पर कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड mg एक्ट कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर एक टेंशन एक्ट कर रहा है। और अगर हमने यहां बैठ करके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जर्वेशन मेरा चालू है, तो इसमें चूंकि सर्कुलर मोशन है तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r। कौन सा v रहेगा? ये v रहेगा, ठीक है। नाउ द ऑब्जेक्ट observer is at the object, then only we can use centrifugal force, because the observer should be non-inertial reference frame. This, when it is moving in the circular path, ये non-inertial reference frame है, ठीक है। तब v कितना है, कैसा है, that we will look at। अच्छा, this angle is theta, this will also be theta। तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg cos theta, right? So with respect to the observer over here, right, observer is in non-inertial reference frame। ऑब्जर्वर यहां पर है तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, इसलिए स्यूडो फोर्स लगा दिया, ठीक है। सो अब ये स्यूडो फोर्स लगाया मींस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया। हम सेंट्रीपिटल से भी कर सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, इट इज mg cos थीटा, इधर टेंशन इधर, तो t माइनस mg cos थीटा नेट फोर्स हो जाएगा इधर, और दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv²/r। इससे भी वही रिलेशन मिलेगा। हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉर्मली लगा देते हैं, सो इट बिकम्स easier to solve the problem, ठीक है। अब इसको अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में देंगे along the radius, तो क्या हो जाएगा, t is equal to mg cos theta plus mv²/r। अब इस टेंशन को स्टडी करेंगे हम। टेंशन जो इसमें है, इस क्वांटिटी को ऑन राइट हैंड साइड वी विल स्टडी। अब देखिए कि cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कब तक रहता है, 0 to 90, मतलब कि यहां से यहां तक 0 to 90, बिकॉज इफ यू लुक एट cos थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 when theta lies between 0 and pi/2 is 90 डिग्री। तो cos थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इट लाइज बिटवीन 1, राइट। 0 और 1 के बीच में ना, थीटा इज 0 और pi/2 के बीच में है, तो मीन्स this quantity will be positive from here to here, and m is constant, g is constant, it is always positive, m in r, these are positive quantities, and v square, this will always be positive, right? v तो स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव रहेगा। हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि this quantity will be positive from a to b as long as theta is from 0 to 90। theta will be 0 over here, ऐसे बढ़ते जाएगा 90 तक, 0 to 90, pi/2 means 90 डिग्री। सो 90 तक cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेसर इक्वल टू 1 when theta is this, ठीक है। सो दिस टेंशन will always be, therefore t is always positive, right, for theta lying between 0 and 90। सो इसका मतलब यहां से यहां तक जब ये मूव करेगा तो ये सर्कल को नहीं छोड़ेगा, ये सर्कुलर पाथ रहेगा इसका, इस आर्क ऑफ द सर्कल, इस आर्क में इधर जाएगा या तो इधर आएगा, बट इट विल मूव इन दिस, इट विल नॉट लीव द सर्कल। पहला बेसिक थिंग कि एज लॉन्ग एज टी इज पॉजिटिव, राइट, it will be on the circle,
सो वेरियस कंडीशंस हम ऑब्जर्व करेंगे. Now you see, object has come from A to, suppose this point is P, and we want the velocity V at this point. So we will look at which are the forces acting on this. Tension T is acting, right? And gravitational pull is acting. And centrifugal force we have considered. Now you see, this tension, this is moving tangentially. It means displacement is perpendicular to this tension. So work done by this tension will always be zero, because displacement will be tangentially and tension is towards the center, which is perpendicular to the displacement. When force and the displacement are perpendicular to each other, then F dot S will be equal to 0, because F dot S, that is the work done. So Fs cos theta, theta is the angle between the force and the displacement. This is the force, displacement is along this, so angle between these two is 90 degree and cos 90 is 0. So work done due to this external force, tension, is 0. This is the conservative force, gravitational pull. So work done by this is 0 and work done by this is 0. So we are having only conservative force, gravitational pull, right? So we can use the relation, concept of conservation of mechanical energy in this case. Suppose this is the point where we have considered the potential energy UA, that is equal to 0. Because in potential energy, what happens at datum line, we can assume 0 at any point, and from there we will do all the measurements, all the calculations we can do. Because we always talk about change in potential energy, right? We can assume datum line over here also. So potential energy over here and the potential energy over here. We will talk about change in potential energy. So 0 can be assumed at any place. So we have chosen potential energy 0 at this point, at the lowest position, and the potential energy over here, suppose it is UP. So we will consider the potential and the conservation of energy we will use between the point A and B. At these two positions we can use the conservation of energy, because only gravitational pull is there, gravitational force is there, that is the conservative force. So using the concept of conservation of mechanical energy, what is that? The total energy over here, that is, if we say initial position is this and the final position is this, so between these 2 points, at point A and P, we can use the conservation of mechanical energy, means potential energy plus kinetic energy over here is equal to potential energy plus kinetic energy over here. So we can write UA plus KA, means at this point, is equal to UP plus KP. UP means potential energy at P and kinetic energy at P. So to get the potential energy, we need this height, that is H, right? Suppose this point is E. From here to it is R, this is H. So therefore we can write H is equal to R minus R cos theta, because you see this is also R and this part will be how much? R cos theta. From here to it is R and this is R cos theta. So R minus R cos theta is equal to H, that I have mentioned over here.
So R we can take 1 minus cos theta in bracket. H is known. So potential energy at A is 0. Kinetic energy at A is half m u square is equal to potential energy at this, that is mg h plus velocity is v, so kinetic energy half m v square. Now we will find this v in terms of u, theta and r, because that is general formula and we can get the velocity at any point, any chosen point we can find the velocity in terms of u, r and theta. See, therefore m and m will go, multiply whole equation by 2, we will get u square is equal to 2gh plus v square, right? Therefore v square is equal to u square minus 2gh, and h, value of h is this, we will put over there. So this is equal to u square minus 2g, h is equal to r, we can write 1 minus cos theta, right? So this we got in terms of this velocity, we got in terms of u, g, r and theta. So at any point from A, B, C and let it this point be D, at any point we can find the velocity. Therefore V is equal to under root u square minus 2gr 1 minus cos theta, right? So this is the velocity when initial velocity u is given at different values of theta at various places. So what is the velocity that is given over there, right? हमने क्या नोटिस किया है कि 0 to when theta is 0 to 90 degree, right? Tension will always be positive, right? ठीक है? Suppose कम velocity देंगे, यहाँ रुक सकता है, और velocity देंगे, it will reach over here, और थोड़ा push करेंगे, it will reach over here, right? So what is the minimum velocity given over here so that it will reach up to the point B at various situations? Means when it reaches over here, when it crosses the top position, then what is the minimum velocity required over here, that we will find out. So first case we will consider the minimum velocity required at A so that the object reaches up to B, means that velocity, minimum velocity, so that it will reach over here, right? So this is the relation from where we can proceed. So here V is 0 is equal to u square minus 2gr 1 minus cos of B, means this theta will be 90 degree, isn't it? Therefore 0 is equal to u square minus 2gr 1 minus 0. Cos 90 is 0, so simply it will be 1, we will get 2gr. Therefore u square is equal to 2gr and u is equal to under root 2gr first. So we can write this is the velocity at A. So if you are giving velocity under root 2gr over here, it will reach at B and it will stop, right? When it reaches over here, what will happen to the tension in the string? When it reaches at B condition, that is the
So condition is let theta is equal to 90 degree. Theta 90 means from A to B. It has reached over here. This is the condition. So what will be tension? When it reaches over here, object is reaching, and at that time this tension will be acting over here. Weight mg will act downward. In this direction, mv square by r will act. mv dash, I will say, v1 I will say. So you see, weight is acting downward. This weight has nothing to do with the tension because this angle is 90 degree. No component of this will be along this. So this is not going to affect the forces in this direction. So in that case, this T1 tension will be equal to mv1 square by r. So therefore TB, I will say, I will write TB, tension at B, is equal to, and suppose it is VB, right? So mvb square by r. And what is VB? When it reaches over here, VB becomes 0. Here VB is equal to 0. So TB will be 0. Here TB is equal to 0. In this case, what happens? VB is 0 and TB is also 0. And when it reaches over here, velocity, tangential velocity is 0 and tension is also 0. The minimum velocity at A, so that the object completes the circle, that is, crosses the point C. Means if the object crosses the point C, it means it will complete the circle. So what is the minimum velocity required at this point so that it will reach over here, and when it reaches over here, naturally it will cross it and it will complete the circle. See, here also the same concept I will use, conservation of mechanical energy. So we will write UA plus KA is equal to UC plus KC. UA is 0, I have chosen. KA is half mu square is equal to UC, potential energy at this point, right? When it reaches over here, its velocity will be 0 or not. That we will look at. We have got the formula. V is equal to how much? U square minus 2gr1 minus cos theta. This was the relation, right? Same relation we will be using at all the places. So you see at this point mg into total height is r, that is 2r plus half mv square, right? So further simplification, m will go, therefore u square is equal to 4gr plus v square. This is equation number 1. And it is minimum velocity required, it reaches over here. It is just about to cross. So at this situation, what is the tension in this? जब ये क्रॉस कर रहा है तो velocity is gradually decreasing. Velocity gradually decreasing means सबसे अधिक चांस इसका टेंशन कम होने का कहाँ है? यहाँ पर है. हम यह मानते हैं कि यहाँ पर स्ट्रिंग का टेंशन कितना हो गया? 0 हो गया, राइट? उस समय इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? यू सी mg is acting downward, इसका टेंशन T is acting downward, certain velocity v is there, so that is
centrifugal force mv square by r. These two are balancing, so we can write T plus mg is equal to mv square by r. ऐसा एक रिलेशन बनेगा इस सिचुएशन के लिए है? हम ये मान के चल रहे इट इज जस्ट क्रॉसिंग, मतलब कि यहां पर सिचुएशन क्या हो सकता है, मिनिमम वेलोसिटी के लिए, फॉर मिनिमम वेलोसिटी यू सी दिस इज पॉजिटिव, अगर इसको मिनिमम करना है mg तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है t को जीरो हम कर सकते हैं। मिनिमम वेलोसिटी निकालना है, मिनिमम वैल्यू के लिए लेफ्ट साइड को क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो टेंशन को हम जीरो कर सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, इमीडिएटली इट विल क्रॉस एंड अगेन वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड टेंशन विल आल्सो कम इनटू force. So here in this case by putting t is equal to 0 plus mg is equal to mv square by r. So ये कैंसिल हो जाता है, हमको मिलेगा v square is equal to rg, therefore v is equal to under root rg बोलो या jr बोलो, बात एक ही है। So when it reaches at this point for minimum velocity, right, when tension becomes zero, then velocity over here will be under root rg. So this velocity can be put over here and we can get the minimum velocity at the point A. So let this be equation number 2. So we can write from 1 and 2, u square is equal to 4gr plus v square means it is also gr, that is 5gr. Therefore u is equal to under root 5gr. This is the condition when it reaches at this point and tension becomes zero, right? So minimum velocity at this point will be how much? Under root rg, and to get that much velocity over here, the velocity required over here is under root 5rg. तो हमको दो सिचुएशन मालूम हो गया कि यहां पर अंडर रूट 2gr जो हमने निकाला था vb, तो vb वॉज यहां से यहां तक जाने के लिए u का वैल्यू कितना निकाला था हमने, to reach at B u is equal to under root 2gr, ये निकाला था हमने, right, and to reach at this under root 5gr. So यहां से यहां तक पहुंच सकता है इस वेलोसिटी से, अगर वो वेलोसिटी दे दे अंडर रूट 5gr तो यहां से यहां पहुंच जाता है। So any velocity which lies between under root 2gr and under root 5gr, उसके बीच में अगर कोई velocity है, then object will be reaching between B and C. B और C के बीच में रहेगा, right? Now, what is third case? Third case, when velocity u, initial velocity मतलब ua, it lies between under root 2gr and under root 5gr. If velocity at this point, जो velocity हम दे रहे हैं इसको, अगर under root 2gr है तो यहां तक जाता है, under root 5gr है it goes up to this. Means any velocity lies between under root 2gr and under root 5gr means object will be somewhere between B and C. So we can write the object will be between B and C, right? यहां से इसके बीच में रहेगा कि अब इसके बीच में रहने पर सिचुएशन देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसका वेट mg डाउनवर्ड एंड ये एंगल सपोज हमने फाई ले लिया, सो ये भी एंगल फाई हो जाएगा। ये हम
टी एज्यूम कर लेते हैं। तो इसकी वेलोसिटी सपोज यहां पर कोई वेलोसिटी v है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगेगा, mv²/r। तो हम क्या आ जाएगा हमारा T प्लस mg इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है। अब यहां से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू r/m t प्लस mg बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वी गॉट दिस रिलेशन। अब इसमें एक नोटिस करने वाली बात यह है कि rm इट इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ t क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ t इज 0 है कि नहीं, मीन्स दिस स्ट्रिंग विल गेट स्लैक्ड, स्लैक हो सकता है, t 0 हो सकता है, उसके नीचे तो कुछ नहीं हो सकता है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ t 0 हो सकता है एटमोस्ट, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। सो फाइनली व्हाट डू वी गेट कि v will never be 0 in any condition in this region. If the velocity is lying between these two, then in between these velocity will never be 0 because situation is like this. t 0 हो सकता है, और जैसे ही टेंशन 0 हुआ, t 0 हुआ, it will get slacked and the object जो है सर्कल छोड़ देगा। क्या ये सर्कल में कब तक रहेगा, जब इसमें टेंशन रहेगा, कंस्ट्रेंट मोशन रहेगा, टेंशन 0 हो गया, slack हो गया, तो it will leave the circle and after leaving the circle it will behave like a projectile motion, right? It will circle छोड़ देगा, ये velocity रहेगा, it will move like projectile and it will follow the parabolic path। ठीक है, इतना concept clear? So velocity is this much and situation इस तरह से रहेगा। So at in this position somewhere it may leave the circle। अब कब कहां पर सर्कल छोड़ेगा, at that time what will be the condition? So वो हम निकाल सकते हैं, actually it is mg in this direction, it will be mg cos phi। So it will not be mg, it will be mg cos phi। तो हम ये निकाल सकते हैं कि at what position, right, it will leave the circle। पहले वेलोसिटी तो पॉजिटिव रहेगा ही, वेलोसिटी विल नेवर बी 0। सपोज ये सिचुएशन हमारा q पोजीशन पर आता है, सो एट दिस पोजीशन व्हाट विल बी द वेलोसिटी वी विल फाइंड आउट। एंड वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो हम ये पॉइंट q है, सो हम यहां और यहां दोनों जगह पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे। ठीक है, हम वो पोजीशन जानना चाहते हैं, वो कंडीशन जानना चाहते हैं कि जब ये सर्कल को छोड़ देगा, एट व्हाट एंगल इट विल लीव द सर्कल, राइट? सो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, UA प्लस KA दैट इज इक्वल टू UQ प्लस KQ। UA is 0 plus KA is half mu square, UA square as a matter of fact is equal to UQ। We want the potential energy over here, so this is R plus this, and what is this? This is R, this is R cos phi, this is R plus R cos phi। So mg into R plus R cos phi plus half mv square, this relation we got, velocity over here। So m will go at all the places, multiply by 2, you will get UA square is equal to 2rg 1 plus cos theta plus v square। From here we can get v square, v square is equal to UA square
minus 2gr 1 plus cos theta, right? So this is, we will consider this as, here it is cos phi, here it is cos phi, and this is cos phi. So this is, these two relations we got. Here in this case, when the object leaves the surface, leaves the circle, at that time tension will become 0. So here if we are putting, I am finding at what angle phi it will leave the circle. When will it leave the circle? When t is equal to 0. So if t is equal to 0, then from equation 1, means this equation, v square is equal to r by m into mg cos phi, right? So this will go, that is gr cos phi is v square. So v square is gr cos phi, v square is this. So we can put the value of this one, therefore v is equal to under root gr cos phi, this is phi. So when it leaves the circle, right, at any angle, its velocity will be under root gr cos phi, and the value of phi depends on the initial velocity given. So initial velocity depends on, if it is in between under root 2gr under 5gr, different values of phi will be there, and velocity depends on initial velocity. And with these two relations, if velocity at a is given, we can find the value of phi, right? Because value of v is there, value of v will put, if u is given, we can find the value of phi. So we will consider this as equation number 3. So from 2 and 3, from equation 2 and 3, v is this under root gr cos phi, we will put the value over there. So v square is gr cos phi is equal to ua square minus 2gr, right, minus 2gr cos phi. We will transfer this on this side, so we will get therefore 3gr cos phi, that is ua square minus 2gr, therefore cos phi is equal to ua square minus 2gr upon 3gr. So we got this relation. So for a given initial velocity which lies between under root 2gr and under root 5gr, for given initial velocity, at what angle it will leave the circle is this. So ua will be put, because gr, these are constants, and if ua is known, we can find the value of theta, this angle phi, right? So this way concept of vertical circular motion is given. So we will solve some numerical problems also. So we will meet again. Till then, all the best.